अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग हैदराबाद का ट्रेडिशनल मशहूर रेसिपी बना रहे हैं। जी हाँ, एक अलग अंदाज में आज हम लोग ये रेसिपी बना के दिखाएंगे। पत्थर का गोश्त एक ट्रेडिशनल और बहुत पुराने ज़माने का रेसिपी है और इसका बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं। हैदराबादी ट्रेडिशनल रेसिपी पत्थर का गोश्त बनाने के प्रोसेस में पहले हम लोग मीट को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग मीट के पीसेस को पतले स्लाइसेस में कट कर रहे थे। सारे पीसेस इसी तरह कट करके इसको मैरिनेट करेंगे। पहले इसमें हम लोग गोश्त ऐड करेंगे। मैरिनेट करने के लिए पहले इसमें हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ साथ इसमें हम लोग ग्रीन कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे, इलायची पाउडर। नेक्स्ट ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला। इन स्पाइसेस के साथ साथ हम लोग इसमें क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग टेस्ट के लिहाज से सॉल्ट भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड करेंगे। स्पाइसीनेस के लिए हम लोग इसमें ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग कैशू नट पेस्ट भी ऐड करेंगे। काजू पेस्ट ऐड करे बाद इसी में हम लोग मिंट लीव्स भी ऐड करेंगे। पीसेस को और भी मज़ेदार करने के लिए इसमें हम लोग कबाब चीनी ऐड करेंगे। फाइनली इसमें हम लोग मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इसको 1 आवर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। बाद में नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे।
इसी कोयले पे जब पत्थर हम लोग रखे थे तब से लेके 1 आवर तक लगातार इसको हम लोग फ्लेम लगाते गए, तब जाके ये गर्म हो गया है। इसी पे हम लोग फर्स्ट थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल अप्लाई करे बाद जो पहले ही मैरिनेट करके रखे थे बोटी, जो गोश्त, वो इस पे रखेंगे। आज का रेसिपी तो परफेक्टली कंप्लीट हो गया है और बहुत ही मज़ेदार है। देखते ही खाने को दिल कर रहा है। इसके साथ साथ हम लोग बगारा राइस और दालचा भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसी दालचा और बगारा राइस के साथ पत्थर का गोश्त भी मज़ेदार रहेगा। इमीडिएटली नीडी पीपल को हम लोग यहाँ से निकलेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
आज का ये वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए, उसके वजह से और भी थोड़े नीडी पीपल को फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।